Hello students, myself Jimesh Shah, you know very well me, okay. In 7th standard, we are already learned Chitrapadani 1 and 2 in first and second session. Now, in third session, we are continuing with the Vandana. What is the meaning of Vandana? First of all, what is the meaning of Vandana? Vandana, that means bowing. Bowing, that means नमन करना. ठीक है. वंदना, वंदना का मतलब भी हमें पता है. वंदना यानी गॉड और गॉडेसेस को नमन करना, वंदन करना. टू प्रे, प्रे टू गॉड और गॉडेसेस. नाउ इन दिस लेसन वी आर कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट वन. दिस श्लोकास आर देयर. व्हाट इज द मीनिंग इन इंग्लिश? द नेम ऑफ श्लोका. Shloka, that means in English it is called verses. ठीक है. First verses, total 4 verses are there. That out of 4, the first one is, we know very well these verses. या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Students, first of all, in verses just clear the pronunciation, because when you all are sitting for the learning of these verses, then the first problem is the pronunciation is not clear for you. First clear the pronunciation. In 4 part we are divide this one in 4 part. The first one, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता. विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. 3 times नमस्तस्यै is there. Clear? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. श्लोका है, वर्सेस है, तो श्लोका जो है उसका गान करना पड़ता है. ऐसे ही हम नहीं कर सकते इसको, इसका गान करना पड़ता है. सो या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. अगेन, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. हमने श्लोक तो देख लिया. We are already seen these verses, but what is the meaning of these verses? The meaning of these verses is bowing, bowing again and again. Namastasyai, 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 namo namah. Again and again I am going down to goddess. Why? Because existed in the form of learning in all animals. In all animals. या देवी goddess, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु that means in all animals. सर्व यानी all, and bhuteshu, bhuteshu that means those who are living on this earth. All type of animals. The human being also one type of animal. Okay, so that's why we are using here animals. Okay, सर्वभूतेषु in all animals विद्या रूपेण संस्थिता existed in the form of learning. जो गॉडेस है वो हमारे अंदर रहे. इस तरह से विद्या के रूप में हमारे अंदर रहे, इसलिए हम गॉडेस को
नमन करते हैं। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमस्तस्यै नमो नमः। ओके, द फर्स्ट translation is bowing again and again to the goddess existed in the form of learning in all animals. Clear, students? The first one. Now we are continuing with the second one. The second one is about Sanskrit. In India, in the state of Tamil Nadu, there is a one village is there, and in that village, each and every person is speaking in Sanskrit only. Speaking in Sanskrit. Now, I am not talking about very ancient time. Okay, in India, very ancient time, the Sanskrit language is verbally communicate करने के लिए उसका यूज होता था, पर अभी तमिलनाडु के अंदर कोई एक विलेज है जिसके अंदर ये लैंग्वेज जो है संस्कृत, उसको हर रोज की बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है। उस गांव में हर एक लोग है वो संस्कृत में ही बोलते हैं। दे आर चिट चैट लाइक वी आर टॉकिंग इन गुजराती और इन इंग्लिश व्हेन वी आर इन स्कूल, सो ऑन दैट टाइम वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, conversation in English to each and everyone. And at home or in relatives we are chit chat with Gujarati only. Like that, in that village the persons are speaking and chit chat in Sanskrit only. Okay, so in second verse is Pathami Sanskrutam Nityam. Pathami Sanskrutam Nityam. Pathami, that means to read. Sanskrutam, Sanskrit. Nityam, always. Okay, Pathami Sanskrutam Nityam. I always read Sanskrit. I always read Sanskrit. Next one, Vadami Sanskrutam Sada. Vadami, to speak. Sanskrutam, the language Sanskrit. Sada, that means always. The always meaning, two meanings are there in always. First one is Pathami Sanskritam Nityam. Nityam, that means also always. And Sada. Sada, that means also always. Okay. So Nityam and Sada, they both are synonyms in Sanskrit. The meaning is same. Which meaning? That one is always. Vadami Sanskrutam Sada. I always speak Sanskrit. I speak Sanskrit very well. Like that, saying in these verses. Now the third one, Dhyayami Sanskrutam Samyak. I meditate Sanskrit well. संस्कृत के अंदर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेट करते हैं तो वो उसका ध्यान करते हैं कि संस्कृत किस तरह की लैंग्वेज है और व्हाट आर द थिंग्स आर इन संस्कृत. दिस ऑल काइंड ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेट इन संस्कृत वेल. I meditate Sanskrit well. And the last one is Dhyayami Sanskrutam Samyak Vande Sanskrit Mataram. Vande Sanskrit Mataram. That means I go to the mother Sanskrit language. Mother Sanskrit language. Sanskrit is a mother of all Indian languages. Just clear in your mind this thing. The Sanskrit is mother of all Indian languages. Okay? Samyak Vande Sanskrit Mataram. I go to the mother Sanskrit language. संस्कृत लैंग्वेज है वो हमारी माता है और उसको मैं नमन करता हूँ. संस्कृत ये जो लेसन है उसका नाम ही वंदना है. तो फर्स्ट वन में हम किसकी वंदना करते हैं? गॉडेस की, जो सरस्वती देवी है. विद्या की देवी कौन है? वी नो दैट who is the goddess of knowledge. So that one is Devi Sharada or Devi Saraswati. And here where we go down,
When we go down and where we go down, we are go down to मदर संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज को हम मदर कहते हैं, जो हर एक इंडियन लैंग्वेज है उसकी माता है, उसको हम नमन करते हैं। ना फर्स्ट का तो हमने गान किया था, सेकेंड वन का गान हम करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं, क्लियर द प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट। पठामि संस्कृतं नित्यं, नित्यं। वदामि संस्कृतं सदा। व्हाट इज दैट? वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। यहाँ पे क है, ये हाइफन है, यहाँ पे ये લીટી है ना, હલંગ, હલંગ कहते हैं इसको, सॉरी હલંગ नहीं, गुजराती माने શું કહેવાય છે? ક ખોડો, ખોડો વર્ડ હોય તેને આખો ન બોલાય, ક दैट इज फुल वर्ड क, उसके बाद में अ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे? सम्यक। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। क्लियर? नाउ प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गए। वी आर कंटिन्यू विद द दिस वर्सेस टू सी। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। Okay, first and second verses we are already learned. Now we are continuing with the third one.